वी विल क्रिएट द वर्टिकल हेडर्स। ये जो वर्टिकल हेडर हैं ये वर्टिकली आएंगे। हाँ, वापस से हम नोटपैड में जाएंगे। यहाँ पे हमने जहाँ पे इसको टेबल को क्लोज किया है, टेबल को हमने जहाँ पर क्लोज किया है तो यहाँ हम बी आर टैग दे देंगे। बी आर टैग नाउ न्यू टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, align is equal to center, bg color is equal to yellow. Now caption for the table, caption heading is h3 and company details close the h3 heading and close the caption of the table. Now table row, in table row first is the table header is the company name, header is the company name, close the table header. Now table data, info text, table data info text. Now close the row, close the table row. Now second table row of the table, then table header, company name, table header, table data, close the table data. Now close the table row. Now close the table row. Now next table row, table header, address, close the table header. Now table data, close the table data and close the row. Close the table row. Now close the table, close the body tab, close the HTML tab. Now save it
एंड ओपन रिफ्रेश ब्राउज़र। ऐसे आपका कंपनी डिटेल्स वर्टिकल हेडर्स के साथ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल हेडर यूज कर रहे हैं और एम्प्लॉय डिटेल्स में, कंपनी डिटेल्स में हम वर्टिकल हेडर्स का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें टेबल कैप्शन को टेबल कैप्शन टैग को यूज़ करना है, टेबल रो टैग को यूज़ करना है, टेबल हेडर टैग को यूज़ करना है, टेबल टेबल डेटा टैग का यूज हमें करना है टेबल डेटा को लिखने के लिए, और टेबल हेडर को हॉरिजॉन्टली हमें कैसे लिखना है, टेबल हेडर को हमें वर्टिकली कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में के आगे डिस्कस करेंगे। क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए जीरो टू जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक सीरीज रमेश कुमार के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।